There is a whole lot of wastage of food on daily basis that happens across the world. Uh, I would still say at home it is far less than what happens in the industry. When I say in the industry, let's say hotels, restaurants, which usually have a long menu and they stock up everything, where they may not sell, or they would definitely are not selling everything every day or even in coming days. So there is a certain food wastage. Also, there is a certain food wastage that happens while we are buying the produce, while it is getting transported to our grocery shop. And one may think, कि, अच्छा अभी उसमें हमारा क्या लेना देना? But वहाँ पे भी we can play a small part, which becomes a significant way, goes a longer way to address the situation. So let's pick up these two situations. Let's say if I'm a somebody who goes out to buy my groceries, और द सब्जी वाला कम्स टू मी एंड मैंगोज आर इन सीजन, वो मैंने क्या लिया, मैंगो लिया, स्मेल किया अच्छा है, फिर मैंने उसे अच्छे से दबाया, अरे ये तो हार्ड है, और छोड़ दिया. So the moment we do this and कि नहीं ये थोड़ा सा ये नहीं है वो नहीं है, and which means that there is an inadequate knowledge about how to handle produce at your level, not at the shopkeeper's level. आपने वहां छोड़ दिया, within 2 to 3 to 6 hours, wherever you press it from will start deteriorating. वो वहां से गलना शुरू हो जाएगा, and very soon वो जो होता है ना कार्ट में, उसका एक ढेरी होती है आम की जो बहुत महंगी होती है, एक थोड़ी सी अलग से पड़े थे, वो for some reason सस्ते दे रहा होता है. Why? Because he knows that people have already pressed or it has been bruised या गिर गया, इसलिए अब वहां पे पड़ा है. So these are these small little things. The same applies to avocados. We buy plums, और जब हम कोई भी चीज छांटते हैं को, तो we have this habit of pressing or storing it in a certain way or using it in a certain way that it कि ना आपने खरीदी, and it becomes useless for the other person. Now, the second part of handling the food wastage is when it comes to you. So the moment it comes to you in terms of whether it's a delivery or that you've bought it, most often than not, there are these plastic bags that single-use plastic that we get for fruits and veggies, right? So one of the biggest problems is that we take it and keep it as is in a refrigerator, अपना vegetable basket में या जहाँ पे भी रखना है, chiller tray में रख दिया, not realizing the moment you put any veggie or fruit in a bag, whether it's a paper bag or a plastic bag, which does not have any circulation of air, the veggies start to deteriorate at a very high rate. So you usually see a lot of moisture on the inside of those poly bags. That is because you're literally choking the veggie or the fruit, and that causes deterioration. And you realize after a while कि आपने कैप्सिकम रखी थी और अरे उसमें से पानी निकल रहा, तो पिल हो गई, अभी तो खरीदी थी, and you have to throw it. So your wastage is not starting from the cooked food that was neglected or burnt or dropped. It started from the moment you started purchasing it and started storing it. So there is a certain way to store veggies where your procurement now is limited in these times, because you're mostly dependent upon आपके जो वो देकर गया है, delivery है, and sometimes you don't give it back or however it is. But your onus starts from handling the raw material. So that is one side. The other side is uh, inexperience of um, cooking, and the multiplication factor, wherein you don't understand or you don't have the experience enough, where you are four of you eating कि कितनी दाल बननी है, whereas कोई घर पर आ रहा है, वो multiplication 4 का 8, अगर मैं I was using 200 grams of dal for 4 people, now I'll use 400 grams. That multiplication doesn't work in that way. So there are these small little tips and tricks, and my mom had taught me early on, and she still uses that. So she has a ladle, करछी है, वो एक करछी है, वो दाल और चावल मापने के लिए वो उनका हिसाब है. वो लेंगी 1, 2, 3, 4 लोग, और एक आधा एक्स्ट्रा डाल देते हैं जस्ट इन केस किसी ने दूसरी हेल्पिंग ली. So her measurements are so accurate that by the end of the meal, no matter how many people are there,
वो होता है कि थोड़ा से बच्चे खत्म कर लीजिए, कहाँ कौन रखेगा, वेस्ट होगा। सो मतलब इतना एप्ट होता है कि कम भी नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा भी नहीं होता। सो दैट ऑल्सो रिड्यूसेस द वेस्टेज, at the same time makes sure that you make fresh every time. And this is a very Indian culture to make fresh food every time with for every meal, breakfast, lunch, dinner, snacks. Whereas in Western countries, you have a very big deep freezer. जो आपका फ्रेश वाला होता है वो छोटा होता है। इंडिया में तो क्या होता है ना, डीप फ्रीजर आइस रखी होती है, एक दो आइसक्रीम रखी होती है, एंड दैट्स अबाउट इट। छोटा होता है, बाकी का फ्रिज बड़ा होता है। आप यूएस या वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएंगे, जो डीप है वो बड़ा होता है, बाकी का फ्रेश वाला थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा होता है, सेम साइज का होता है, बिकॉज दिस जस्ट स्टॉक अप एवरीथिंग, दे डोंट कुक फ्रेश। तो वी हैव दिस हम कहते हैं धरोहर है हमारी कल्चर की, कि ताजा खाना आएगा, ताजा बनेगा। सो इंडियन फूड, where a lot would debate, I would say is a very healthy food in many ways. So I think portion control is again something that we need to understand. और वो आता है एक दो बार गलती करके, बट आप मापदंड ले सकते हैं, whether it's a measuring cup और कटोरी है, चम्मच है, करछी है, वो आपकी किचन में आपके पास है, just try it out once. अगर गोभी भी बनानी है, कटोरी में काट के आपने बना के फिर बनाई, आपने देखा कितने लोगों को पूरी पड़ती है, and that's how you learn. You can also speak to your nani and moms. They never seem to waste food. वो गोभी भी है, डंठल भी है, उसको डंठल का छिलका भी, उसका डंठल की भी सब्जी बन जाती है। अरे इसके पत्ते मत फेंको, इसको ये कर देंगे। एंड जो वेस्ट बचता है ना, आज तक टिल डेट इन माय होम, माय मॉम सेज डोंट थ्रो इट इन द डस्टबिन, अलग से रखो, जब गाय आएगी उसको खिला देंगे। सो इट्स अ वेरी इकोलॉजिकल बैलेंस्ड वे ऑफ डीलिंग विद वेस्टेज, वेयर इवन योर मील्स आर नॉट वेस्टेड। वो वेस्ट हमारे लिए है on your kitchen. We are a very heavily neglected society, if I can say, especially the modern ones, who does not like to spend on kitchen. So if you look at, and especially if you're a single, oh my God, your kitchen is the worst place to visit. Buying the right equipment, because a lot of wastage also happens because you have not invested in the right equipment. You have one kadai, उसमें एक आदमी का भी खाना बना रहे हो आप, उसमें 10 आदमी का भी खाना बना रहे हो, which means that when you're cooking for one, you are actually over cooking the food, or you're using more fuel and more energy. So there is a wastage of energy, there is a wastage of resource that is happening. So you need to have 2 or 3 different utensils for different number of people to cook. And the moment you have a smaller equipment for, let's say, if you're cooking for one person or a single or 2 people, you will cook food faster. You save time, you save energy. So there is a whole lot of investment and relooking into the kitchen. So if you have a हाथ से पीसने वाला grinder, and if you have 10 people coming, और आज के जमाने में नहीं कर पाते, invest in a good mixer grinder. Now mixer grinder भी पड़ा है, जो पिछले पार्टीशन में आया था, उस वक्त से चलता जा रहा है, बुरी हालत है उसकी। वो साफ नहीं हो रहा, या वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा, शोर ज्यादा कर रहा है, पीस कम रहा है। वो जो पालक पीसता है, उसका हीट जनरेट करके उसका न्यूट्रिशन तो खत्म हो गया वहीं पे। The moment let's say any of your greens, when you grind it, if it turns a darker shade of bottle green to anything that is darker from a bright green in your mixer grinder, consider that food has already lost a lot of nutrition. So there are these small little investments that you need to make. There are equipments that are smart. There are equipments that need maintenance. You need to invest in a very good refrigeration system. You need to have a backup for your refrigeration, a little bit of baby proofing, where you can make them sit in one safe place and make them watch the process of cooking. When they see कि इतनी गर्मी में इतना खाना बन रहा है, and जब उनके टेबल पे आते हो कहते हैं मैंने नहीं खाना, over a period of time they realize, hey, it takes a lot of effort, that किसी ने effort डाला है, मेरी mom थी या maid थी जिसने बनाया, it takes a lot of effort, I should not possibly waste food, because I understand the amount of, वो पहली दफा नहीं आएगा, but you kind of build it in the kids, invite your family in the kitchen, make your kitchen a place जो पहले होता था कि रसोई में खाना बनता था, नीचे आपके वो रखती थी चौकड़ियां, वहां पे बैठ के सब हाथ पैर अपना चपले वपले बाहर निकाल के सब जमीन पे बैठ के किचन में खाते थे। द कॉन्सेप्ट ऑफ ईटिंग इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन एंड वो नहीं होता था, सारा खाना वाज इन फ्रंट ऑफ यू। ये आज बना है, इसको खत्म करना है, या थोड़ा बना है तो वो प्रोपोर्शनेटली आपको खाना। अच्छा आपको पता है कि पतीला खत्म हो रहा है, इवन इफ यू आर हंग्री एंड द अदर पर्सन इज, वो होता है ना कि कम, अरे यार तू खा ले। So this is also, it's very cultural. Unfortunately, we have lost it to modernization, as we were just discussing that. जैसे chips खाना is very modern. So it's
one of the elements of getting modern. There is a advantage to it, and there is a big disadvantage. But there is always a midway that one can find.